Janata Party is going to retain power. Of course, the figures vary from a broad band from 260 to 360, and the numbers for the BJP plus led NDA, and for the opposition, of course, a fragmented verdict. If you look at the broad brushstroke, then we look at it, there are a lot of issues that crop up. But Mr. Yashwant Deshmukh, you have been associated very closely with this whole business of going into poll and poll reading. Can you just give us a broad parameter, because what we'll come to in terms of the other issues as we go along? Really, who have provided, which have provided the vote share estimates, because for the survey or the exit poll, the only thing that you can estimate is the vote share. Seat share is just an extrapolation of those vote share estimates. So all the serious agencies that I came across who have provided, their vote share estimate ranged between, for the NDA, between 40% to 43%. And for the UPA, it ranged somewhere between 27 to 30%. So between those ranges, which is perfectly explainable statistical ranges, because survey science allows you a plus minus, the projection of the seat should be kept aside, because from our conservative estimate of the 287 to some hyper estimates of 360 plus, there are various shades of thing, and people say, how can you come up with so much of variation? It's very easy to understand that much of variation. You see, for example, in Delhi, if suppose any polling agency finds that BJP is leading in 5 seats, and suppose like that, you can always allow them to have at least 1 seat of flexibility, that okay, 5 could be 4 or 5 could be 6. That means the range is 4 to 6. Now imagine India is such a big country that we have got 29 plus 130 states, out of which, even if you remove the 5 smallest of the small states, you look around the 25 states, you would end up giving them a margin of plus minus 25 seats in the same vote share estimate. This is why any margin, any conservative estimate, say for example of 275, could range anywhere between 250 to 300. Similarly, any conservative estimate of 300 could range between 275 to 325. What is required to understand, whether the direction of the estimations are in the same, whether the vote share estimates are telling you the story. So the story, the real juice is in vote share estimates of all these serious agencies, 3 or 4, that the NDA vote share is crossing 40. They are somewhere between 40 to 43. That the UPA share is still below 30, somewhere between 27 to 30. And there is minimum 10 percent point gap between NDA and the UPA vote share. This is very critical to understand, because in 2004, I have been since morning, many people have been asking me, what if I'll come back to you again on the कि कई पुराने आंकड़े निकाल के देखे जाते हैं, लोग कहते हैं कि ये तो गलत हुआ हमेशा एग्जिट पोल. आपका अपना अनुभव इतना लंबा है, इससे ऊपर कुछ प्रकाश डालें. वो लोग अपनी बात कहते हैं वोट डालने के बाद. अगर वो ओपिनियन, ये एग्जिट पोल कहीं ना कहीं जो नतीजे आते हैं उसके आगे पीछे ही रहते हैं, तो फिर विपक्ष जो है वो ईवीएम पर दोष कैसे डालता है? अगर एग्जिट पोल हुआ और वो ये दिखा रहा है, जैसे कल के सारे एग्जिट पोल देखे तो बाय एंड लार्ज सभी एग्जिट पोल एक चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि एनडीए को बहुमत मिलेगा. लेकिन जो ही नतीजे आएंगे और बहुमत मिलेगा तो बोलेंगे ईवीएम में गड़बड़ी हुई. तो एक तो ज़रा आप ये स्पष्ट करिए कि एग्जिट पोल को भी, मान लीजिए आपने कहा हम पर विश्वास नहीं करते एग्जिट पोल, लेकिन रिजल्ट आने पर जब एग्जिट पोल उसके आसपास होते हैं, जैसे हम 2014 की जब बात करें तो सभी ने ये बहुमत के आसपास का आंकड़ा दिया था, लेकिन आंकड़ा 2002 बहुमत से थोड़ा और ज़्यादा निकला. तो इसमें भी ईवीएम पर दोष डाला गया. तो एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं किया, नतीजे एग्जिट पोल के आसपास आए, फिर आप कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी हुई. तो इसका मतलब या तो एग्जिट पोल करने वालों में भी गड़बड़ी है. तो क्या अभी आज ममता बनर्जी ने एक बयान दिया है कि ये एग्जिट पोल इस तरह से मैनेज करवा लिए गए हैं ताकि ईवीएम में गड़बड़ी को जस्टिफाई किया जा सके. तो ये जो दोष लगता है ईवीएम पर, तो बाद में लगता है पहले
आप पर लगता है यशवंत जी कि आप जो लोग हैं, क्या आप कोई मिली भगत के साथ काम करते हैं कि आप सब लोग मिलकर एक जैसे आंकड़े दे रहे हैं कि एनडीए को बहुमत आ रहा है और बाद में विपक्ष कहेगा नहीं ईवीएम में गड़बड़ हुई? तो मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं के लिए ये बात स्पष्ट करिए कि आप लोग कहाँ खड़े हैं। जीत की भविष्यवाणियां आई उतनी बार तो सर्वे एजेंसीज हम ही लोग थे, बहुत अच्छे थे। जब पिछले 2 विधानसभा चुनाव में उनकी जीत की भविष्यवाणियां की। इनफैक्ट जब पहली बार वो जीती उस समय तो जो आज वो भाषा बोल रही है वो लेफ्ट फ्रंट बोल रहा था, क्योंकि हम उन्हें हारा हुआ बता रहे थे। पिछली बार जब पश्चिम बंगाल में अभी 2 साल पहले जब उनकी जीत की भविष्यवाणी की तो वो लेफ्ट फ्रंट ही भाषा बोल रहा था। जो हारता है उसके पास में 2 ही सबसे ज़्यादा मूक शिकार होते हैं। एक पोस्टर, इनको मारो, क्योंकि ये अपने बेचारे पत्रकारों की तरफ से बहुत ज़्यादा, मैं अकेला शायद एक अपवाद हूँ कि पत्रकार और पोलिंग का एक संवेद वो, तो मैं यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ। लेकिन सामान्यतः पोलिंग एजेंसीज के जो काम करने वाले लोग होते हैं वो बहुत पत्रकारिता दुनिया से दूर होते हैं। उनको नहीं समझ में आता कि अपने आप को हम कैसे डिफेंड करें इस तरह के राजनीतिक बयानबाजी से। दूसरी चीज़ ईवीएम। अरे भाई, ईवीएम के ऊपर आरोप लगा करके आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि आप जो आज मुख्यमंत्री बनी बैठी हैं या इस दिल्ली शहर के जो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं वो ईवीएम के बगैर जीत गए? दिल्ली शहर में जब 67 सीटें उनको मिली 70 में से, वो ईवीएम के मिली कि जिन्न से आके दे गए? या फिर पश्चिम बंगाल में जिस तरह की ऐतिहासिक जीत 1 बार नहीं 2 बार ममता दीदी को मिली, वो कहाँ से आ गई? आप जब ये इस तरीके की बातें करते हैं तो बड़ी समझ में नहीं आता कि हंसू की रो। देखिए टंडन जी, आप मुझे इतने वर्षों से आप वरिष्ठ हैं, आप जानते हैं, अपने स्थिति में भी नहीं करते हुए भी 40 से ज़्यादा देशों के इलेक्शंस को मैं स्टडी कर चुका हूँ, जाके देख चुका हूँ। जितनी बार मैं भारत से बाहर जाता हूँ, यकीन मानिए कोई भी दुनिया का चुनाव देख के आता हूँ। मैं अमेरिका में अब काम करता हूँ, वहाँ के जितनी बार भी मैं जाता हूँ, और मैं अमेरिका में ट्रेन्ड क्वालिफाइड इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। मैं वो इलेक्शन कराने की सिस्टम्स को मैं जानता हूँ, वहाँ के अधिकारियों से मिलता हूँ। जब मुझे केवल और केवल गर्व होता है अपने देश के लोकतंत्र पर, इलेक्शन कमीशन पर, लोकतांत्रिक प्रणाली पर, चुनाव की मशीनरी पर, कि इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच में जिस एफिशिएंसी के साथ में हमारे यहाँ के चुनाव कंडक्ट होते हैं, हमारे यहाँ के चुनाव संपन्न होते हैं, दुनिया में कहीं नहीं होते अशोक जी। मैं क्या बताऊँ, आप मुझसे ज़्यादा पूरी दुनिया घूमे हैं और मैं जानता हूँ, मैं वही बात कह रहा हूँ जो आप शायद सुनना चाहते, क्योंकि ये बात शायद आप मेरे मुंह से कहना सुनना चाहते थे। ये बात आपको भी पता है। जितना आप भारत के बाहर जाइए, केवल और केवल भारतीय लोकतंत्र पर आपको और ज़्यादा प्रगाढ़ विश्वास और श्रद्धा के बगैर आप वापस नहीं आ सकते। अगर दुनिया के बाकी लोकतांत्रिक जगहों के आप चुनाव देखेंगे तो इन चुनावों का अपना गरिमा है केवल ये है कि ये सारा रोना धोना, मुझे लगता है केवल जो हारता है ये उसका फिक्स्ड रोना धोना है, और ये हर कैंप में से होता है। मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि ईवीएम कैंप का अशोक जी मुझे अच्छे से याद है। 2009 में जब बीजेपी हारी तो सबसे पहले ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अडवाणी जी के कैंप से और जीवीएल नरसिम्हा राव जी ने पुस्तक तक लिख डाली, और मैंने तब भी पुरजोर विरोध किया था। तब भी मैंने इस पर आर्टिकल लिखे थे, टीवी पे आ जाएगा, बोला कि ये क्या बात है, आप चुनाव हारते हैं तो खिसियाहट वहां निकालते, कम से कम लोकतंत्र के साथ में ऐसा मजाक मत कीजिए। चुनाव जीतिए तो गरिमा के साथ स्वीकार कीजिए, चुनाव हारिए तो उसे गरिमा के साथ। Look at whether be it exit polls or pre-poll surveys, and India is a heterogeneous society, and that's something which is, as Mr. Deshmukh would bear us out. It's different in America. It's a more homogeneous society, or probably in the Western democracies where the size and people itself are numbers. But here, a country of say 900 crore who are voters, it's always people can question that, have we got it right? But we see all of them are being engaged simultaneously by so many channels, and so many agencies are coming up. So that means that those who engage them, they put a lot of money into it, and their credibility is also at stake. So therefore, I think we have no reason to believe that they are either partisan or they fudge the statistics just to showcase their ability. But if it was the case, even if they have gone wrong, for instance in 2004 most of the pollsters had gone wrong, exit poll, but still in the next election the same agencies were engaged by so many people. In fact, this time Yashwant Deshmukh agency has been engaged by more than one channel, in fact number of channels. So that means I think we are now a mature democracy, and therefore we should believe that these are scientific ways of doing it. They may go wrong here and there, 10%, that they always leave the margin. But I think when we talk of the exit poll, largely it is some kind of, an entertainment period for the 2 years till we get the result.
So people also take the exit poll with a pinch of salt. These are not results, but they keep people engaged for the 3 days or so. So, but people forget the exit poll. In fact, to be We fair- only remember exit poll when the next election comes. People always remember the actual results. Of course, Mr. Deshmukh, I would like to look at, since psephology is as an art becoming a science, it requires a lot more thing. And in a country like, as a question directed to Ashokji also, to understand a heterogeneous society like ours, sample size itself is an issue It's for very us. issue. I can explain in how big a sample size we need. Actually, the answer is 1,200. That's it. You need a perfect randomized sample of just 1,200 in people to have any estimate. Like estimate how many people like red kurta versus a green kurta. If you want to have an estimate of that, 1,200 people are good enough. But when I say, suppose this country like 60% of Indians like red kurta over green kurta, suppose I am saying that, then if you'll ask me, can you tell me what about Uttar Pradesh? No, I can't, because that sample is not enough for estimation of Uttar Pradesh. To have an estimation of Uttar Pradesh, I need to sample 1,200 in Uttar Pradesh. Now, if you will ask me what's people in Lucknow want, I can't tell, because for that I need to do 1,200 in Lucknow. If in Lucknow you will ask me Lucknow East, I have to do 1,200 in Lucknow East. So smaller the universe, larger the sample size. Now imagine in US, because just like Tandonji said and you also mentioned, it's a homogeneous society. There are not many variables in the population. It's basically two languages, English and the second is Spanish. I mean, these are primarily two languages. Then you have African Americans, you have got whites, and within the whites you also have a Hispanic, population, which is the new largest minority over there. So basically very minuscule 1% rest of the world, including the Asian 1 or 2%. What we are talking about, only about 5 or 6 demographic variables. In India, you know the caste and the religion composition. In Uttar Pradesh or any seat for that matter, each and every seat has a different caste and religion combination. Every seat has a different profile. Every state, forget about every state. This is why we have 543 individual elections. It's not a one country, there is not a homogeneous big election over there. So if you want to do a really correct estimate, you have to actually poll more than 1,000 sample in each and every of those Lok Sabha segment. Imagine like our exit poll which we went this time, we tried to do that, the sample size became more than 500,000. But channels were willing to support for that kind of accuracy. Even then, we are still, even after that, we are saying there is still a margin of error of plus minus 3% on the vote share estimate. So imagine the kind of work and hard work that goes through. India, when we do a routine survey, like every week we do our trackers poll in India for the last 10 years, every week after week. Whenever we do it in 11 languages. Every week we are interviewing 1,500 people for a popularity and other approval ratings and other things. My friends in Europe, they always tell me, every week, actually, technically speaking, you are doing something like a Eurobarometer. India is that big, India is that divergent, India is so different from rest of the world. The only other country which I find could be near about comparable to that kind of demographics is South Africa. You know, they have got too many tribes and languages and those kind of issues. So, in a nutshell, actually the sampling point, if you want to do accuracy, you need to have a sampling points much more and much bigger sample. One thing which I want to say, that is in Hindi. घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, जिस ओर अशोक जी ने इशारा किया. मैं या सी वोटर 25 साल से अगर आपके सामने आंकड़े लेके आ रहे हैं, आप हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, लोग पूछते हैं, मीडिया पूछती है, अखबार में छपता है, टीवी पे दिखता है, तो कुछ तो लोगों का भरोसा सी वोटर ने या यशवंत देशमुख ने अर्जित किया होगा, उसी कारण से आता है. अगर मैं बार बार गलत होऊंगा तो मेरे ऊपर से भरोसा हट जाएगा, मुझे या सी वोटर को काम या किसी भी एजेंसी को फॉर दैट मैटर किसी को भी काम क्यों मिलेगा. तो स्टैटिस्टिकल गलतियां होती हैं, एस्टिमेशन में गलतियां होती हैं, लेकिन मोटे तौर पर अगर 90% से ज़्यादा हमारे आंकड़े हर चुनाव के एक डायरेक्शन में सही हम पकड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि जो गंभीर इंस्टीट्यूशनल काम करने वाली एजेंसीज हैं बड़ी, उनको बहुत ज़्यादा इक्विटी स्टेक पे होती है. उनकी नाम से ज़्यादा, अपना नाम क्रेडिबिलिटी सामने लगा देने से ज़्यादा इन नंबरों पे, वो भी ऐसे कठिन समय पे जहाँ पे
वो हरियाणवी में प्रॉवर्ब आप सुनाते थे ना टंडन जी, नाई नाई कितने बाल उतार देता हूँ जजमान वाले, कि भाई तो 72 घंटे में तो नतीजे ही आ जाने। अब सोचिए 72 घंटे में अपनी क्रेडिबिलिटी की शीशा लेदर कराने के लिए हम कोई भी क्यों, हम तो अगर आज दिया और परसों गलत नतीजों में आ गया तो हमको तो वही पल लठ पड़ने हैं सारी जनता से। अभी जैसे यशवंत सर्वेज वगैरह उन्होंने कहा कि लेबर पार्टी जो है मार्जिन ज़्यादा है और वो शायद आ सकती है सत्ता में, लेकिन हुआ विपरीत। और साथ ही साथ लोगों ने जैसे यशवंत जी की बात भी कही, यूएस का भी गिनवाया या किसी और ऐसे कि जहाँ एग्जिट पोल बिल्कुल ही विपरीत हुआ और परिणाम कुछ और निकले। तो ऐसे में क्या तरीका निकल सकता है? देखिए, तो इसमें इसका अर्थ ये नहीं है कि एग्जिट पोल करने बंद कर दिए जाए। देखिए, सवाल ये है कि चुनाव परिणाम से पहले लोग कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं कि तो है रुझान किस तरफ है, कहाँ जा रहा है, और उसके लिए ये जो एक्सरसाइज करते हैं एग्जिट पोल वाले, वो एक्सरसाइज जो है लोगों को 72 घंटे तक एंगेज रखती है, खुशफहमी में रखती है। लेकिन एक बात सच है, कम से कम हम अपने देश के बारे में करें तो मेरे पास 1998 से लेकर अब तक के आंकड़े हैं, सिवाय 2004 के बाकी सारे एग्जिट पोल जितनी भी कंपनियों के पोल ऑफ पोल निकालें वो कोई बहुत ज़्यादा गलत नहीं थे। जैसे कल के एग्जिट पोल में एक बात तो लग रही है कि रुझान किस तरफ है, तो एनडीए का एक बहुमत की तरफ आंकड़ा जाता हुआ दिख रहा है। अगर इतना भी हो जाता है, जैसे मान लीजिए बहुमत मिलता है एनडीए को, फिर चाहे वो 273 से मिले या 280 से मिले, बाकी चीज़ें एकेडमिक हैं, लेकिन अगर ये हो कि साहब आपने तो बहुमत का आंकड़ा पार किया और यहाँ उल्टा आंकड़ा आ रहा है यूपीए के फेवर में, अगर इतना अंतर कभी आता है तो सचमुच में लोगों का विश्वास समाप्त हो जाएगा और ये इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी। लेकिन अभी तक इतना नहीं हुआ। अगर हम 2014 की भी बात करें, देखिए 2014 में सिवाय एक टाइम्स नाउ ORG ने जो बहुमत से कम का आंकड़ा दिया था, बाकी सब ने बहुमत का आंकड़ा दिया, और किसी ने तो 340 भी दिया और निकला 336। तो इसका मतलब ये है कि सभी जो करते हैं एग्जिट पोल, वो अगर एक ही तरफ रुझान दिखा रहे हैं तो लोगों को लगता है जैसे शेयर मार्केट आज क्यों ऊपर उड़ गई, इसलिए उनको लगा कि अगर सभी एग्जिट पोल के जितने भी एजेंसी हैं सब एनडीए को एक बहुमत की तरफ दिखा रही हैं, तो इसका मतलब कम से कम सरकार तो नरेंद्र मोदी की बनी रही है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया फर्क था पिछली बार भी और इस बार भी, तो आप समझ सकते हैं कि जब हार जीत का अंतर 1% के अंतर पे टिका हुआ हो, वहाँ पे एस्टिमेशन में, जबकि स्टैटिस्टिक्स में 3% के अंदर मार्जिन आ सकता है एरर का, वहाँ पे इतना कठिन था, और उसमें अगर गलत हुए तो कोई बात नहीं। जो श्रोताओं को मैं बताना चाहूँगा कि आप एग्जिट पोल में क्या देखिए। पहली बात, किसी भी एग्जिट पोल में अगर वोट शेयर नहीं दिया है तो उसको रद्दी की टोकरी में डाल दीजिए, क्योंकि एग्जिट पोल का काम या सर्वे का काम वोट शेयर के एस्टीमेट पे आके रुक जाता है। वोट शेयर को आप सीट में कन्वर्ट करते हैं, ये आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने वोट ही नहीं निकाले हैं तो सीट कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए केवल और केवल वोट शेयर पे। जैसा मैंने पहले बोला कि वोट शेयर में अगर गैप 10% का आ रहा है बड़ी एजेंसीज का यूपी और एनडीए के बीच में, तो 3% का मार्जिन ऑफ एरर हटा भी दीजिए, तब भी वो लीड में एनडीए ही दिखाई देती है। इसलिए ध्यान वोट शेयर पे दीजिए और ये देखिए कि लीड में किस तरफ ज्यादातर लोग दिखा रहे हैं, नतीजे उसी डायरेक्शन में ही आने की संभावना है। अशोक जी ने बोला कि बिल्कुल उलट आ जाए तो वो एक गंभीर मसला है, वो नहीं होना चाहिए। Extrapolating into seats, if you can help us with the benefit of listeners too, that requires a different skill sets and data sets, or with the same vote share extrapolation? Absolutely. Right. With the same vote share. Direction would be correct. But direction would be right. But from a simple majority to 3/4 majority, depending on the kind of algorithm or formula they are using to convert the vote into seats, that is not part of survey science. Survey science stops at the probability and the estimation of the vote share within a plus minus 3% of variation. This is where the survey science stop. After that, same vote share might be giving 10 different kind of projection with 10 different kind of psephologists or even journalists for that matter. So let's be very clear. Please do not look into the seat share estimates. They are okay, they are estimates, but look into which direction they are aiming at and very closely look out for the vote share. And I would be very happy if the audience of All India Radio and those who are listening this program, they insist to the news organization that please do not just give the seat share estimate. Every person in this country, every audience of All India Radio is a psephologist on his or her own.
If we give you the vote share, you can very well imagine on your own which party is likely to get what kind of seats. You don't need people to tell you how many seats a party likely to win. You are good enough to understand. Insist on the vote share. Insist the news channels. Insist the newspapers that don't tell me the seats. Give us the vote share. We will know what we No, have but to do. can we? I would eventually ask, अरे सीट तो बताओ कौन कितनी सीट जीत रहा है. So this the expectation of the listener, expectation of the reader, or expectation of the viewer is vote share is fine, but how does it convert into seats? I think that's where we need to look at it. I mean, No, can't we leave? But these shares could go up or down depending on different formulas. Generally, what happens as far as our projection model is concerned, our model is fine-tuned to pick up a conservative estimate. We never predict a sweep. We never go hyper on any one party regardless of what. But when we get a much larger gap of the vote share, we always maintain that we are predicting a simple majority. But due to this high margin of votes, it is very likely that these seats might even go one side, and this could easily convert it. Simple majority can easily go for a two-third. A two-third majority could easily go for a three-fourth. That is very much likely. टंडन जी, दो चीज से पहले जो एग्जिट पोल आए जिस पे थोड़ा लोगों को लग रहा था उत्तर प्रदेश को खास कर लेकर, क्योंकि जितनी सारी तमाम सारी रिपोर्ट निकली थी गठबंधन के ऊपर की, वो गठबंधन एक चैलेंज पेश कर रहा है, लेकिन सिवाय एक या दो किसी ने गठबंधन को ज़्यादा सीट नहीं दी. अधिकतर सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी. थोड़ा इस पे आपसे टिप्पणी चाहूँगा, यशवंत जी से भी पूछूं. पिछले चुनाव में तो ये विनिंग कॉम्बिनेशन दिखता है कागज पर, लेकिन सचमुच में कितना वोट एक्चुअल में ट्रांसफ़र होता है या नहीं होता. अब जैसे उत्तर प्रदेश में एक नारा चला था कि 37 पे लाल बाकी पे शिवपाल, यानी 37 पे लाल का मतलब ये है कि जो अखिलेश है वो लाल है मुलायम सिंह यादव का, तो 37 सीटें उसको मिली हैं, इस पर तो लाल को दीजिए बाकी शिवपाल को दीजिए, यानी यादव वोट जो है उसको मायावती को नहीं देना. मान लीजिए कल को जिस तरह के रुझान दिखाई दिए हैं इस एग्जिट पोल में, और सचमुच में ही ये अलायंस को, गठबंधन को सीटें नहीं मिलती हैं और मायावती की सीटें अखिलेश से भी कम रह जाती हैं, तो मायावती तो चिल्लाएगी ना कि आपने यादव वोट ट्रांसफ़र ही नहीं किया, और ये अलायंस टूट जाएगा और आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा. तो ऐसे में कागज़ पर जो अलायंस बनता है जिसमें माना जाता है कि वोट शेयर ट्रांसफ़र होगा और एक्चुअली में नहीं होता, किसी भी कारण से नहीं होता, तो आपस में मनमुटाव होता है, झगड़े होते हैं. यही कांग्रेस और अखिलेश में उत्तर प्रदेश के असेंबली चुनाव में हो गया और गठबंधन टूट गया. अब एक नया गठबंधन किया है, जातिगत समीकरण है जिसका नाम है MYD, यानी मुस्लिम, यादव और दलित. अब ये तीनों का अगर वोट शेयर मिलाकर देखें तो ये तो 60 सीट जीतनी चाहिए, लेकिन अगर रिजल्ट उल्टे आते हैं तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई. या तो मोदी ने ये जो जातिवादी जितने भी ये हैं इसको तोड़ दिया, और जैसा 2014 में भी हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने जातिगत समीकरण उत्तर प्रदेश में बनते थे सबको तोड़ दिया और मायावती को एक भी सीट नहीं मिली और भारतीय जनता पार्टी और उसके अलावा 73 सीटें ले गए. तो अगर इस बार भी मान लो बीजेपी 60 सीट से ऊपर लेती है तो इसका मतलब ये जो जातिगत समीकरण है ये सचमुच में ज़मीन पर काम नहीं करते. तो ऐसे में हम ये एग्जिट पोल वालों को तो ब्लेम नहीं कर सकते ना. जा रहे थे including the states like Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, including the states like West Bengal. You know, the gain of BJP on the conservative side, some people have said 8-9 seats, some people have said 20 seats. But BJP is gaining. That is something which everybody has picked. Okay. Uttar Pradesh is the only state in India, only state where there have been a conflict in exit poll that, okay, who is ahead. Reason being, it is the only state in India where the gap of the vote share between the two fronts is so less. In all the exit polls, the Mahagठबंधन or the BJP vote share is ranging between 42 to 45%. Basically, within 2% of the gap, in some places they have got 1% MGB ahead, some places they have got 1 or 2% BJP ahead. So, which is very much within the statistical margin of error. This is precisely, I am so glad you picked up this point. This is precisely what I wanted to say. When you look at the vote share, then only you know how close it is. And if it is close, they are bound to have problems in the estimation. But when the margins are 5%, 8%, 10%, and for that matter even like 20%, as in the case of Gujarat and Rajasthan, then obviously it is not going to have any conflict, at least in the direction. So in Rajasthan, the most conservative estimate went up with the 20 and 5 scenario, and 5 or 6 seats of the Congress to a 0 seat for Congress. Now with the 20% of gap, ideally
Modanade Parbat, everybody is saying that BJP is sweeping Rajasthan. Only state is Uttar Pradesh where the contest is so close on the state level that people are facing problem. The only way to tell UP better is to actually do a massive poll in each and every seat of Uttar Pradesh. So all the 80 need to be go next. Yeah, then you can have a seat-wise estimation and probably think of we do that, but even then we say that it's very difficult. So pardon us for the closeness of fight in Uttar Pradesh and the differences in that one. But overall speaking, I think the direction of the exit polls have been very clear, and I would be extremely surprised if something defies and comes against the direction of the exit polls. तकरीबन कांग्रेस का कुछ आया, अदर्स का कुछ है, सब ये है। अगर आंकड़े पे ना जाते हुए अदर्स तो इतना बड़ा खेमा है अपने आप में, कुछ हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है या कुछ निर्दलीय है, तो उसका आप कैसे देखा जाए? के दल भी होते हैं जी। अब उनको भी हम दिल्ली में बैठे हुए, हाँ निर्दलीय बहुत होते हैं और कई ऐसे निर्दलीय भी होते हैं जो बहुत शक्तिशाली प्रभावी होते हैं। जैसे हमने पीछे देखा राजस्थान में कितने निर्दलीय जीत गए, तो कोई पोलस्टर उनको गिनता भी नहीं है। तो ऐसे में लेकिन एक चीज़ जो मैंने अभी इसको समझा यशवंत जी से कि अगर उत्तर प्रदेश में वोट प्रतिशत का अंतर बहुत कम है तो क्या सीटों में ये किसी भी तरह से जा सकता है? क्योंकि अगर 6 में से 4 पोलस्टर तो भारतीय जनता पार्टी को आगे कह रहे हैं और 2 गठबंधन को आगे कह रहे हैं, तो यहाँ कहीं उलटफेर हो सकता है सीटों में, क्योंकि यही एक प्रदेश है जहाँ सीटों के उलटफेर से बहुमत का आंकड़े में भी अंतर आ सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल कांटे की टक्कर है, यानी 35 से 40 की सीट की रेंज के बीच में दोनों के ही आंकड़ों को आपको दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की स्थिति 2 सीट पे ही सीमित है, इस पे किसी को भी कोई मतभेद नहीं है किसी पोलिंग कंपनी का। लेकिन यस, उत्तर प्रदेश इज द वन स्टेट वेयर 1 point or 2 can result in a sweep to any one of these, you know. If I were to supplement the question, last time you are unlikely to win seats. This is why now, in other words, hypothetically speaking, all of everyone, you know, just think for a second, there was no Mahagathbandhan in UP. Think of it. We wouldn't have been talking about these elections anymore because we would have thought now it's one way, it's over. Without a Gathbandhan, it would have been like Delhi, where the BJP is approximately 40% and Congress and Aam Aadmi Party both at approximately 20% each. So obviously the 40% will sweep because the opposition is split. Same would have been in Mahagathbandhan in UP. If SP would have split and gone alone, BJP would have got 70 seat plus again this time. But the moment they came together, 2 और 2 वहाँ पे 11 हो जाता है मिलके. One state I would like to for the future politics of Tamil Nadu, we'll know on 23rd. But just before this Tamil Nadu, and there is one more question that you asked previously, that about the others. There are some inherent problems in each and every state which would decide where the others will go. For example, wherever DMK will go, ADMK will not go because they have a problem. Barring the Communist and the Congress going together against the BJP, there is no other conflict which are shared so well. Similarly, there is a common animosity as far as KCR and YSR is concerned and vis-a-vis TDP. So wherever Chandrababu Naidu goes, neither Jagan Mohan Reddy would go there nor KCR would go there. So it all depends on those dynamics. Now that Chandrababu Naidu is actually campaigning so hard with the opposition alliances, all of a sudden you will find KCR and Jagan Mohan Reddy have almost dropped the opposition unity in that way. So what you can expect, there is 3 people that you must keep in mind. Biju Janata Dal of Odisha, YSR Congress of Andhra and KCR, basically Telangana Rashtra Samiti. These 3 gentlemen, between them, the exit polls are showing they would be having about 40 odd seats between them. And this bloc, come what may, is unlikely to go with the Congress. They are likely to go with the BJP. If they need it, they don't need it, that's a different thing. But in the parliament itself, you can count this just the way whatever the left front gets in the parliament, you can count them by default in the favor of Congress. Congress and left are directly in pitch in Kerala. No matter Kerala 20 seats, no matter who wins there, they are going to support Congress, be it left, be it Congress. Similarly, in these 3 states, these 3 players, no matter who wins, how many seats, in the parliament, they are likely to be standing along with the BJP.